वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 और ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो इट इज आल्सो नोन एज डाइऑक्सीजन। तो इस डाइऑक्सीजन की वैसे अगर आप नेचुरल अबंडेंस देखें, इट इज क्वाइट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर एज वेल एज इन अर्थ क्रस्ट। एटमॉस्फेयर में आपको पता है देयर इज 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में ये डिफरेंट सॉल्ट्स के फॉर्म में कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड सो ऑन। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेथड्स। फर्स्ट मेथड हो गया बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड एट a high temperature in presence of manganese dioxide, then it produces potassium chloride and oxygen. Similarly, potassium permanganate when heated undergoes decomposition to give you potassium magnate, oxygen and manganese dioxide. Another method by which oxygen can be prepared is by hydrolysis of sodium peroxide. So when sodium peroxide is reacted with water, इसको हम water के साथ react कराते हैं तो आपको product मिलता है sodium hydroxide and oxygen. और it can also be produced ऐसे metal oxides के thermal decomposition से जो कि काफी कम reactive हैं, जैसे mercury oxide, silver oxide, copper oxide. तो these oxides can easily be broken down to give you respective metal and oxygen. For example, mercurous oxide when heated it gives you mercury and oxygen, and silver oxide on heating gives you silver and oxygen. मैन्युफैक्चर लेवल पर अगर हम देखें लार्ज स्केल पर, तो वन मेथड इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। इफ यू रिमेम्बर, ये मेथड हमने नाइट्रोजन के मैन्युफैक्चर में भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक एयर इज फिल्टर्ड, कंप्रेस्ड, कूल्ड डाउन एंड देन व्हेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरीड आउट, तो जो नाइट्रोजन है दैट एस्केप्स आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। एंड अनदर मेथड बाय विच oxygen is obtained at manufacture level, that is by electrolysis of water. So when water is electrolyzed in presence of acid or base, then it gives you hydrogen and oxygen. Hydrogen is produced at cathode and oxygen is produced at anode. So electrolysis of water evolves oxygen at anode. These are some of the preparation methods used for preparation of oxygen. Properties अगर आप इसकी देखो, so if we consider the properties of oxygen, it is colorless, odorless, tasteless gas, sparingly soluble in water. वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी है दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। अनदर वन इज इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो इट इज अ न्यूट्रल गैस एंड सपोर्टर ऑफ कंबशन। खुद बर्न नहीं होती बट हेल्प्स इन combustion. So you can say it is supporter of combustion and is a good oxidizing agent and also causes combustion of, you can say combustion or oxidation of
number of metals, non-metals and compounds. For example, अगर हम इसका reaction consider करें with metals, like magnesium burns in atmosphere of oxygen to form the oxide like magnesium. Aluminium burns in the oxygen, तो aluminium का combustion नहीं होता, इसकी surface पर there is formation of the layer of aluminium oxide. Similarly, the non-metal like carbon burns with oxygen to form you carbon dioxide. Sulfur burns in oxygen to form sulfur dioxide or sulfur trioxide. Compounds की बात करें तो simplest compound like methane burns in oxygen to form carbon dioxide and water. And a very common example of combustion of compound is combustion of glucose. To form carbon dioxide and water and a lot of energy, or ये energy is responsible for carrying out various processes, right? So in this way it can be used for combustion and oxidation of number of metals as well as non-metals. If we look at the uses of oxygen, तो uses की बात करें तो पहला important use, liquid oxygen is used for artificial respiration. आपने देखा है हॉस्पिटल्स वगैरह में liquefied oxygen is used in the form of oxygen cylinders to provide oxygen for respiration. Another important application or use of oxygen is as oxyhydrogen or oxyacetylene flame for welding. And also liquid oxygen is used as rocket fuel. So these are some important uses of oxygen. So the binary compounds of oxygen with other metals and non-metals are known as oxides. So now we have some look at the oxides. Oxides जब दूसरे oxygen जब दूसरे metals या non-metals के साथ react करके एक जो binary compounds बनाता है, these binary compounds are known as oxides. तो इन oxides को भी हम अलग-अलग categories में classify कर सकते हैं. पहले oxides हो गए, these are simple oxides where there is oxygen in the form of O2 negative ion and other metal or non-metal may be there. ये जो simple oxides हैं, they may be acidic, तो acidic oxides में आ जाएंगे all non-metal oxides like CO2, SO2, etc., NO2, ठीक है, जितने भी non-metal oxides हैं, they are acidic. Another one is
बेसिक ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स में आपके पास आ जाते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड्स लाइक sodium oxide, magnesium oxide, etc. So these are the metal oxides. Then we can have amphoteric oxides. तो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं that behave both as an acid as well as a base, तो इनको हम क्या बोलते हैं? These are known as amphoteric oxides like zinc oxide, aluminium oxide, etc. Silicon dioxide is also example of amphoteric oxides. And next are neutral oxides. Neutral oxides which are neither acidic nor basic. For example, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है? दे ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स. उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स, जिनमें दो तरह के आयंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल Fe3O4. It is a combination of ferrous oxide and ferric oxide. Similarly, you can have Pb3O4, which is also a combination of lead oxide PbO and Pb2O3, right? तो ये examples हो गए किसके? These are the examples of mixed oxides. Clear? And if we look at the acidic and basic trend of these oxides, trends of acidic and बेसिक कैरेक्टर, इनके ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का अगर आप ट्रेंड देखो तो पहली बात, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, अब क्या होता है? इनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. जैसे कि आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, इससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है. और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, राइट? एंड फॉर अ गिवन एलिमेंट acidic character increases with increase in oxidation state of central atom. तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इनका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स की बात करें तो N2O, NO,
N2O3, N2O4 एंड N2O5। तो इन ऑक्साइड्स में जैसे जैसे हम N2O से N2O5 की तरफ जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है फ्रॉम +1 to +5, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट डाईऑक्सीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे the another allotropic form of oxygen, that is ozone, the preparation, properties and uses of ozone, that we'll be doing in next lecture. Goodbye till then.